Hello, am I audible? Hello, okay. Anyone there from RC Bhubaneswar or we'll start? Regional Center Bhubaneswar ki achanti, otherwise we'll start our class. Okay, so my voice is audible to everyone. So first of all, I would like to invite all you uh, today's class, and today actually we'll be starting your uh, MSc Geoinformatics class, and I'll be talking about the geoinformatics overview of geoinformatics. And from today onwards, I think up to September 21 or 22nd, one of my colleague, Mr. Satyaranjan Giri, also he's going to take your class, and myself actually Dr. Rakesh Thakur. So first of all, I would like to know ki, I think 10 students are there. So just a very very short introduction. So one by one, just tell me about yourself. Like if people are working professional or if people are students, because in this interaction for this long like 1 month or more than 1 month, so we'll be knowing each other, and we'll be no doubt we'll be talking about the different aspect of remote sensing, geospatial technology, and other aspect. Uh, in addition to that, also we'll be having some discussion with other aspect of uh, practical things, and some other innovative things that we can do through remote sensing. So I'd like to listen from you first, then I'll be having some other discussion. Like Disano Dasgupta, I can see. So can you introduce yourself, Mr. Disanto Dasgupta? Hello, Yeah, you are audible. sir. I have completed my master's in geology from Ranchi University, Okay, uh, fantastic. and I'm doing this course to gain experience and gain a job also in this field. Okay, so welcome, dear, in this world of spatial science. And another one, uh, Amal Raj. Amal, if I am pronouncing well, it's Amal Raj. Can you please introduce yourself? No, I think it's not audible thing. Okay, uh, Mr. Jala. Mr. Jala. यस सर। Yeah, can you please introduce yourself? सर मैं मेरा नाम यशपाल जाला, मैं गुजरात जूनागढ़ से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी बहुत अच्छा। रिसेंटली मैं वाइल्ड लाइफ डिवीजन सासनगिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सर एज ए जीआईएस एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ सर। ओके, जी ठीक है। तो आप जो है ये MSc जो इन्फॉर्मेटिक्स का आप करते हैं, तो इट विल बी लाइक एन एड ऑन टू योर करियर, सो फैंटेस्टिक, यस सर। and just not only in this 1 hour 2 hour of discussion, and after this time also, if anyone uh, want to have any sorts of collaboration with me and also some sorts of guidance if you need, then definitely I am there uh, to help you guys. Okay, so I am ओके just सर। giving you my mobile number along with my mail ID also. It's because see, it is
like 1 or 2 months, or no doubt this time, but in the coming session also, or in coming semester also, we are going to be connected. So that's why a source of bonding and cooperation, I think it is very much essential. And nowadays the world is very small due to this emerging technology, and due to this digital transformation. So I think this is very essential. Okay, then we'll move forward to Ritika Bhatia. Yeah, Miss Ritika Bhatia, please. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, yeah, you are audible. Please. Yeah, sir. I am pursuing my master's in environmental science from Jamia Millia Islamia. Okay, Delhi. Yeah. Yeah. Okay, still you want to enhance your expertise in this remote sensing and geoinformatics. That's why. Yes, sir. I want to learn the practical part. It will be useful in environmental science course as well. Obviously, obviously. And Yeah. I would like to say one thing, that whatever we are going to have the interaction in this class, and along with me in coming some days, like I think 23 or 24, Mr. Satyaranjan Giri also, he will be taking some classes. And what I can assure that no, after this class also, I have given my number and email ID, so you guys can reach me out. And if it is in my official time, then if it is not possible, then I'm not reaching you out. Otherwise, definitely I'll be there to help you guys. Okay, then Pankaj, yeah, Pankaj. Yes, sir. I am audible, sir. Yeah, Pankaj, you are audible. Tell me. Sir, myself, Pankaj Shingo. Recently, I complete my PhD from Okay, University of Gold Bongo, Malda district okay, of from West West Bengal. Bengal, nah? Yeah. So Recently, I in which completed subject you have done your PhD? geography, sir. Okay, fine, absolutely fine. Recently, I have engaged as a project scientist at IIT Delhi, sir. एट दिल्ली, अरे यार बहुत अच्छा है। Yes, sir. बट आपको क्या है, ये इग्नो वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसके साथ आपको ये आपका थोड़ा नॉलेज भी एनहांस करना है, नहीं? Yes, sir. Yes. Okay, so you all are welcome. Then I think Yasna, if I am pronouncing well, it's Yasna. We would like to listen from you also. I think she is not there, or something is there. And Manish, introduce yourself. Hello. Yeah, Hello, sir. I am audible. yeah, Manish, you are audible. Introduce I yourself, am please. Manish. I am from Faridabad. And in 2016, I did a master's in environmental science, and I have 6 years of experience with JES. Now I'm Okay. pursuing geoinformatics, PGDC in geoinformatics, so gain experience and knowledge. No, actually, it's a very, I can say, welcome step taken by IGNO. This time, actually, they have started not only MSc in geoinformatics, but along with that, they have also started MSc in geography. So, many people they are now, if some people they are engaged in somewhere, they are also now getting a chance to study this beautiful subject. So, once again, I would like to welcome all. And thing is that now I can see that around 10, 10 students are there. So thing is that what I realized, ki you people mostly you have some idea about what is remote sensing and what is GIS and all the things. And thing is that see, I'm not a professor. I'm a scientist actually by profession. So thing is that uh, I cannot say that I know everything. And my my principle is that we will have some discussion. Fine. So thing is that if any guys they are going to have some issue during this journey of this master degree, at that time we are there to help you. If something can be done by me, it's okay. And if it is difficult for me, then I can uh, have discussion with my colleagues and connection, and also we would like to help you guys. Okay, so
like in your geoinformatics, different your syllabus are there. Like today, I am given the task for the like overview of geoinformatics and all the things. So and also you are having some, I think from regional center Bhubaneswar, sir has joined. So sir, would you like to say something to the student? No, no, you continue, sir. Okay, fine, fine. So thing is that I think all the students or most of the students, they know little about remote sensing and geoinformatics. So thing is that what I can say ki nowadays what I just now I was going through all the introduction because I would like to know that some students they are from geology or they are geography, then environmental science, and also some student those who have not joined there today, uh, some they must have some background of like computer science and all other things. So now thing is that uh, nowadays the use of remote sensing and GIS is very increasing day by day, and you can say that in each and every sector actually its role is increasing actually very rapidly, I can say. Nowadays you can think that why a doctor is going to use this remote sensing and GIS, but obviously a doctor can use this to perform so many spatial things, no doubt not in medical things, but see, for example, if actually I am not jumping to the real topic, I'm just trying to give some interesting fact and also trying to attract you guys why this subject is very beautiful and you will be interested because okay, I would like to say I think Ritika and someone else, those who are having environmental science background. So I would like to listen you guys ki how for the environmental impact assessment and for any environmental related things, how you are planning to like use this space based input, I can say, because like in remote sensing it's nothing but the space based inputs, and in GIS what we are doing, we are using different tools to visualize the real world to a like digital platform and also in some hard copies like in 2D form also. So I would like to listen from those person from environmental science background. How you are planning ki, if you are going to have some good knowledge in remote sensing, how it can be useful for you? May I, sir? Yeah, you can. सो बेसिकली सर अभी मेरा डिसर्टेशन होना है मास्टर्स का, सो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। मुझे उसमें एयर क्वालिटी एनालिसिस करना है। आई वाज लुकिंग कि रिमोट सेंसिंग से मैं कैसे कर सकती हूँ, तो मुझे मिला दैट आई कैन यूज गूगल अर्थ इंजन फॉर एयर क्वालिटी एनालिसिस। देर आर वेरियस डिफरेंट सेंसर्स एंड सैटेलाइट इमेजेस दैट आई कैन डाउनलोड। सो एक चीज़ तो वो हो गई। एंड देन आफ्टर मास्टर्स देर आर मेनी प्लेसेस वेयर आई कैन यूज लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, urban planning. I have interest in these things. Okay, actually, Ritika has rightly told कि now she is going to have her dissertation and also after master she is planning to do some beautiful work in by using remote sensing and geospatial science. So actually, I have forgotten. Actually, I have not introduced myself very like briefly. Actually, I did my PhD in remote sensing, and now actually I am in Odisha Space Application Center. I was in Space Application Center for some years. So now actually I am in the State Disaster Management Authority in Odisha, that is in OSDMA. So now in our center actually we use the remote sensing and geoinformatics to deal with the disaster management. Okay, so think see the vastness or the broadness of of this subject, how it is increasing. For an environmentalist, what I can say ki as someone is from I think Bengal, West Bengal, na, so like you are having Sundarban area is there, the mangrove forest are there, and like in Odisha, the Bhitarkanika area is there. So anyone any other like
beside Ritika, someone other also is having environmental science background, I think. Hello. Now, Yeah, Manish, I think you are having also environmental science background, na? actually, I have worked in a satellite image. In GIS, we can monitor environment by using the satellite image. Satellite image help the natural resources, soil, and habitat of the different species. Hmm, With hmm, the help hmm. of GIS, we can observe the distribution of different species and use this information to allocate the species. Okay, anyone, Yeah. can you elaborate key, like suppose I would like to know the temporal changes of like Sundarban or any any natural forest or any Ramsar site, key, like what was the condition in 1950 decade or 70 decades, for example 70 decades and now. So how I can use remote sensing along with no doubt GIS? Anyone can elaborate how I can do that in a very briefly, like take for 2 minutes and or 3 minutes. You can elaborate how it can be useful or what Hello, is the sir. process. Yeah, Pankaj, I think. Actually, there is a lot of application in remote sensing GIS in environmental field. Hmm. Such as you told me in forest monitoring, we can easily identify the forest vegetation growth from 1970s to recent time. We can easily understand the what are the uh, urbanization rate in the Urban wetland, sprawl, all the things can be monitored very easily. Yes. urbanization rate in the wetland Hmm. dominated area, and how wetland is sinkage between 30 or 40 years, and how urban growth or urban sprawl continuously degraded this wetland ecosystem. That's easily. And also what we can do key, like if we are utilizing two different satellite image for two different time Yes, periods, yes, and yes, we yes. can know that this is the percentage that whether Hmm. that vegetation is converted into concrete jungle or Hmm. something else. So Yes, sir. but important thing is that we not only we can draw that this percentage of land has been converted, but what are the Yes, yes. factors responsible for that? As a decision maker, we can take a decision Hmm. very wisely if we are Uh, using this spatial science Sir, wisely. Yeah. we can So easily identify the conditioning factor which are very responsible for the wetland degradation, and we can very easily identify the forest, urban forest or urban green space and blue space using the remote sensing and GIS technology. okay, anyone can answer me ki, like actually who is the founder of, like, or we can say the father of remote sensing in Indian context? Anyone? Bikram Sarabhai, sir. Bikram Sarabhai, na? I think someone from Gujarat also was there, I think. Right? Mm. Okay, and I think music is life. Someone has joined. His name is showing like music is life. So, what is your name, dear? Can you please introduce yourself? Music is life. I don't know what is his name. हेलो गुड इवनिंग सर Yeah, मेरा very नाम good सर evening. बलविंदर सिंह है जी जी बोलिए, भूपिंदर अ, सिंह जी, नहीं? हाँ अच्छा जी सर वो एक्चुअल में वो गूगल में ही पता नहीं सर सेव हो गया परमानेंट ही वो चेंज ही नहीं होता अब तो अच्छा बलविंदर अच्छा। है सर मेरा नाम जी और जी। अ, आप बाकी कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? सर मैं एक्चुअली अभी तो दिल्ली में हूँ सर वैसे मैं अमृतसर से बिलोंग करता हूँ ओके। हाँ जी अच्छा। और सर मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है एक्चुअली मैं अभी डिफेंस में हूँ और मैं अच्छा। सैटेलाइट्स से कॉन्स्टलेशंस पे काम कर रहा हूँ राइसेट जी। कॉन्स्टलेशन पे काम कर रहा हूँ मैं ओके ओके। तो वैसे तो हमारा इस पे जीएस पे भी काम है बट इतना फ्लो नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेके इसमें सीखना चाहता हूँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। इट्स वी आर एक्चुअली वेरी हैप्पी कि लाइक एक्चुअली नाउ डेज द definitely our army person, defense person, the use of this mostly the remote sensing satellites is increasing very day by day, and nowadays
ki ISRO is capable of doing resolution of like in sub-meter and 25 centimeter, 20 centimeter, 25, 30, like that satellite image are actually now available. Yes, sir. Yes, sir. And in a very recent development, actually, the geospatial policy, everyone listen it carefully, because now what happened ki if you belongs to any government organization or any university, whatever, then the satellite products are like freely available, I think, uh, up to 1 to 5 meter, I hope. And for other private entities also, with some restriction, it is freely available. So what I would like to say, for your research work, and also for your different students, those who are going to have their any dissertation or any research paper writing, so they can use that resources from ISRO. I think the website is like Bhunidhi. From there, you can get those satellite information. And if we say in a like worldwide, you are, I think, aware about that USGS Earth Explorer, and so many websites are there who provide a lot of like information about this satellite remote sensing, and also different products are available, different satellite images. Like I think some time before we were discussing about the temporal changes, and some environmental monitoring, and also I think Ritika, she was talking about some air quality monitoring, and so many applications are there. So by utilizing not only the Indian product, but also in worldwide also, mostly from country like US, they are giving so many satellites in free of cost. It is open access to everyone, so we can utilize those product, and we can use for our own application. Okay, so actually, what I was planning, ki, as it is our first interaction today, so I was trying to make some like comfortable from both sides, from my side, no doubt, and from all you guys. So what I did, I have also shared my personal mobile number along with my email. So beside this time, in other time also, if someone is interested to have some like discussion with me, and regarding not only in remote sensing GIS, but in what like someone is planning for some, suppose, research paper, book publication, and also any type of research work. So I'm open to you guys for every time. No doubt, official time it is very difficult to have talk, but obviously in the course of time, definitely I'll be trying to answer you guys. Okay, Uh, so I think it is okay now. So I think now, due to the restriction also, and we have to complete our syllabus. So I think now it's time to jump to our like your classes are there, na? So overview of geoinformatics, because no doubt you guys know ki like you are having introduction to geoinformatics. It is a topic. It is a block one, I think. Then remote sensing and image interpretation, we are going to talk about that. Then Mr. Giri, he will be talking about GPS, and some he will be again talking about the DIP, digital image processing. Then myself, I'm going to take classes of spatial analysis and modeling, then application of geoinformatics. So along with that, we'll be also talking about some practical of this GIS and remote sensing. So thing is that anyone can define what is actually, what do you mean by remote sensing actually. Now we are very theoretical, because we have to discuss it as per the like your syllabus. Also, we would like to go. So if anybody you are having any issue till now, then they can tell me. No issue from my side. So anybody can answer what is remote sensing, because thing is that nowadays it's not like you will be go one by one. I'll be talking from my side, and you will be listening for like half an hour or 1 hour, then you will be feel bored. So that should not happen. So I'm very free. Anyone can ask anything,
And I would like to listen from you guys. What do you actually mean by remote sensing? We are just talking about remote sensing in GIS, remote sensing in GIS, DIP, all the things we are talking. So anyone can define, like Disanto, he is having a geography background, I think. Can you, Disanto Dasgupta, can you define what do you mean by remote sensing actually? The very common, I can say, definition of remote sensing. What is that actually? I think Disanto, he has left the he has left now Sir, again. can I? Yeah, you are Can there. I? So Yeah, tell Sir, me. basically, remote sensing is the science or art that gathering information without touch the object or without being physical contact of the object. Okay. So my question is that whether my eye is a sensor or not. Hmm? Yes, sir. My, yeah, it's a Obviously, sensor, na? yes, sir. How? Because we measure or estimate some objective or estimate some thing without estimate some things with being physical contact with the eyes. Right. Actually, thing is that anything, it can be anything, if we are acquiring information about that Yes, sir. particular object and without having the physical contact, rightly you said. Yes, sir. So that is actually known as remote sensing. So remotely we are sensing something, and we are Yes, sir. obviously we are getting or we are acquiring the information. So that Yes, sir. technology is known as remote sensing. So Yes. it is not bound that only by acquiring information from satellite image, by like we are sending the rockets and we are having the satellites, and they are and we are getting the information about the earth object. That is not the only case that we can say remote sensing. But see, suppose I am standing in a rooftop, okay, in my building, and I am looking the bottom of my surrounding, okay, or the जो नीचे का एरिया है ना, द टेरेन, उसको इफ आई एम वाचिंग, देन ऑल्सो आई एम गेटिंग, इट कैन बी सैड एज ए रिमोट सेंसिंग. तो एनी वन कैन आंसर, जो ऊपर से हम देखते हैं ना, एक व्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? Bird eye view. बर्ड आई व्यू, और एनीथिंग एल्स? Panoptic view. Aerial सिनोप्टिक. view. Aerial view. Panoptic. It can also be said as synoptic view, right? And actually we will be discussing all the things very briefly in our coming classes. uh, so till now, whether my wordings, my sentence, if you are feeling boring or it's okay, frankly tell me, because otherwise we have to change ourselves. Okay. Sumit Narayan Dwivedi, Yes, sir. कहाँ से हैं आप? Sir, actually I belongs to Varanasi, but at present I am pursuing my PhD from IIPS Mumbai. Okay. So now we are having some students, those who have already uh, PhD holder, and also some people are, they are continuing their PhD. Okay. Uh, okay. So now what I am planning, uh, I have some okay. Actually, before that, I would like to say one thing. Uh, the course material, okay, the course material developed by IGNO, how many of you downloaded those things, and whether you have received the hard copy of those materials or not, I don't know. Have you the do you have those materials? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You sir. have the hard copy, na? Yes, sir. Yes, sir. See, from my experience, I can say that the syllabus or the course structure, the materials developed by IGNO, it is one of the best I can say, because see, so many aspects they have covered, and actually it is a very beautiful piece of work. Okay, so आप जो है ना, ये कोर्स का जो आपको हार्ड कॉपी मिल रहा है, आपका ये कोर्स खत्म होने के बाद भी डोंट मिस इट. ओके, इसको आप कहीं खोना मत.
मैं खुद मतलब इग्नोस को बोल के एक कॉपी मेरे लिए मैं मांगूंगा, क्योंकि बिकॉज बहुत अच्छा ये लोग बनाए हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन है इसका, सिलेबस जो है ना, सिलेबस के साथ जो कोर्स मटेरियल बहुत अच्छा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका जो प्रेजेंटेशन है या कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें जस्ट मिनट, क्योंकि वी हैव टू कंप्लीट योर ऑल दिस syllabus ना, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल। सर हाँ बोलिए। सर ये क्लासेस रोज 6 से 8 रहेंगी कि चेंज हो जाएंगी कल नहीं से? नहीं, ये 5 से 7 रहेगी एक्चुअली। आई वर्क फॉर द उड़ीसा सेक्रेटरीट ना, सो एक्चुअली मेरा 5 बजे एक मीटिंग था। तो मान लीजिए किस दिन मीटिंग रहता है ऐसे, तो मे भी चेंज हो सकता है 6 बजे ऐसे या 5:30 ऐसा हो सकता है। अदरवाइज मोस्टली 5 से 7 ही रहेगा। देख लीजिए सर, पॉसिबल हो जाता तो 6 से 8 कर दीजिए सर नहीं, ऑफिस। सुनिए, 6 से 8 से क्या है ना, देखिए अभी भी मैं मेरे ऑफिस में ही हूँ। तो ऑफिस फिर अगर 6 से 8 करते हैं तो फिर 8 से फिर घर जाते जाते 9 बज जाएगा ठीक ये। है हाँ, तो देखते हैं, अगर कुछ ये होता है तो किसी दिन मान लीजिए कुछ इशू होता है तो वी कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर। अच्छा, आप देखिए मेरा जो ये स्लाइड है, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं, थोड़ा देख लीजिए विजिबल है या नहीं। दिख रहा है सर। दिख Yes, रहा sir. है? अच्छा, अभी इसको अभी दिख रहा है ठीक ठाक? Yes, sir. ओके, सो Yes, sir. या थैंक यू। अभी क्या है कि हम लोग जो है वी विल टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि रिमोट सेंसिंग ये है जो भी है डिस्कशन हम किए थे, वो सब थियोरिटिकली मतलब क्या है कैसा है वो उसको हम अभी देखेंगे। ओके, तो अभी विजिबल है ना? एक बार कोई रेस्पॉन्स कर दीजिए प्लीज। ओवरव्यू ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये वाला स्लाइड विजिबल है? यस सर, विजिबल है। ओके Yes, sir. चलिए। Visible. या सो जो हम बोल रहे थे कि लाइक व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, सो वी ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, लाइक what we are doing now, we are like gathering information via any sensor, it can be anything, and without the physical contact, if we are gathering those information, so that is actually known as remote sensing, as 5 or 10 minutes before we talked about that. So but thing is that how to gather those information, and our eyes, we can say it is a sensor to observe the world, and like see, an energy is required na. Suppose I am in a dark room and it's totally like black, that time whether I can see, I cannot see. So any source of energy is required to sense in when remote sensing is concerned. Then broadly, if we're talking about remote sensing, then I can say that it's observation, and also we are doing some sorts of measurement about any object without having the physical contact, rightly said. So but in this process actually what key different energy is required, and also there is a electromagnetic radiation is also involved in such things. And obviously we are talking about the environmental remote sensing, we are also discussing about those things, like, and see, the sun's rays is coming, and it is actually coming through our atmosphere, and finally it is reaching to the earth's surface, and in between those time actually very little amount of energy
is reflected back to the sensor, and the sensor captures those data or those energy, I can say. So like different albedo and some like scatterings are there, some reflectance are there. So these things we'll be talking later on, but very broadly, if I'm talking about the electromagnetic radiation or spectrum. Uh, See, another thing I would like to clear that, as the classes are very limited classes are there. So whatever is possible, we'll be discussing. And if you are skipping something, then definitely I'll be happy to share the uh, presentation, or anyone, or you can do one thing, whatever students are there, you can like make a WhatsApp group, please, so that and if I am having some documents and also some information, then I can share to you guys, and that will be very useful for you. So I have given my number, and you people, anyone can take the initiative, and you can have the WhatsApp group for like this 2024 MSCGI, like that. So make a group, and we can share our thoughts and knowledge in that group. Okay. So like whether the slides are changing, anyone please respond. Now I am in the electromagnetic spectrum slide. It is changing now. Sometimes it does not change actually. No, No, sir, sir, it's it's showing not on the changing. first slide. It's not changing. Not, sir. No, sir. Acha. Okay. Now it's there. Now change, sir. Now also it is not changing. Now Sir, change, sir. change, Change. Okay, change. okay. So now I am having the electromagnetic spectrum. So here actually in optical remote sensing, if I can say, the range that is 0.4 to 0.7 is very important for us. And actually, before that, anybody can you explain me that what type of remote sensings are there? Like as I say, suppose it is a very the weather condition is not good. It's raining, and so it's cloudy. The cloudy are there. So whether I am able to capture the information of Earth's surface or not? Anyone? Yes, sir, we can by using microwaves. Whether only microwave or other sources are there? Whether microwave can be used or some other sources are there to capture the information? So probably like demasking the cloud तो उसको effects. क्या बोलते हैं, जी? Like from sun we are getting the information. Okay. Passive remote That is sensing. passive, na? Yes, sir. Yeah, that is passive. And why? And another one is Active. Active sensor. active. So whether the active remote sensing, can you explain about some uh, example of active remote sensing? Anyone? That takes place through sensors such as Landsat satellite. How can you Like say only Landsat satellite? See, No, just an example. Radar. Radar. see. I am explaining it. See, actually, just a minute. In my incoming slide, this one. Now you can see now components of a remote sensing system. In this slide, the total mechanism of remote sensing is described here beautifully. Okay, now it's changed. Na? It's already slide is changed. Anyone? Yes, sir. Yeah. So see, now I would like to explain. Now the in A we are having the energy source, that is sun. Okay. Then the energy is coming towards the Earth surface, and in between that our environment, our atmosphere is there, and in the atmosphere actually we are having so many interaction, like some scattering is there, some reflection are also there. Then it is coming it is coming to the earth terrain surface are there.
like whatever is present in our surface, like it may be a vegetation, it may be some like क्या कि आपका कुछ सेटलमेंट हो गया, लाइक और सम एरिया में वट एवर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रिवर और सी, वट एवर जो भी है प्रेजेंट है। तो उसके बाद अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, एंड इन डी यू कैन सी द sensor are there, or in D and E actually sensors are there, so they are capturing the energy, and those and see different satellites, they are having different type of sensor. And anyone, can you please explain ki why they have different type of sensor? Anyone? The my friend from, I think, DRDO, sorry, in the defense sector, someone is working now. So why actually satellites have their different sensor? What is the reason behind that? Yes, नो आइडिया सर, सॉरी। So, देखिए, so because different sensors हाँ, could have different resolutions in terms of like radiometric resolution, temporal resolution. Like you earlier said, na, land is land cover. So there we need temporal resolution approx like 1 year if we are going to see the trends of land is land cover of Odisha or mangrove. that is partly you are correct, but thing सर is that, ऑल्सो yeah, tell me. अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन्स में कैप्चर होते हैं, थर्मल होते हैं, हाँ, माइक्रोवेव हाँ, होते हैं। हाँ, ये राइट, रीजन है डिफरेंट राइट। सेंसर्स का। देखिए, इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, राइटली यू टोल्ड कि इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, सपोज एक 1970 का एक लैंडसेट, आप लोगों को पता है ना, यू नो अबाउट लैंडसेट, यू हर्ड अबाउट लैंडसेट इमेजरी। तो लैंडसेट इमेजरी का अगर 1970 का, सपोज आई एम टेकिंग एन इमेज of a particular region, for example for Odisha or Delhi or for West Bengal, whatever, for example for Sundarban area, mangrove region are there, 1970 का एक मैं इमेज लिया, ठीक है। देन 1990s और 2000 का एक इमेज में लिया, और सी फॉर एग्जांपल 2024 का, लाइक नाउ वी आर इन 12th अगस्त, सो सपोज जून जुलाई का कुछ भी वट एवर सेटेलाइट बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, हम उसको इमेज लिए। तो जो रिजोल्यूशन होता है ना, जैसे हम लाइक वी आर यूजिंग आवर मोबाइल, इतना पिक्सल का है, इतना रिजोल्यूशन का है, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना क्लैरिटी मिलेगा। तो एक 1970 in 1970, suppose the satellite image that we received in 1970, it was having like 72.5 मीटर ऑफ रेजोल्यूशन। तो उसको हम क्या है, ठीक से सारा चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बट अगर उससे और थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, और अगर हम इफ यू आर टेकिंग 2000 का है, उसमें मान लीजिए आपका आ गया है 23.5 मीटर ऑफ रेजोल्यूशन, और अभी तो आपका 100 मीटर में आ रहा है, लाइक 0.5 मीटर, 0.3 मीटर ऐसे आ रहा है। तो we can measure, or we can interpret, or we can differentiate different features of the earth in a very accurate manner. Okay, ये एक रीजन है, that's why different satellite have different sensor. Another very important thing is that you were talking about different type of resolution. ये जो मैंने बोला, ये दिस इज अबाउट स्पाशियल रेजोल्यूशन, बट इन टर्म्स ऑफ बैंड, डिफरेंट बैंड हमको रिक्वायर्ड है। लाइक आप लोगों को पता होगा NDVI है, देन हम NDWI करते हैं, देन वेजिटेशन इंडिसेस है, ठीक है, वाटर इंडिसेस है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिसेस आर देयर। तो ये सब को करने के लिए क्या है कि लाइक इफ एनीवन यू हैव यूज्ड लैंडसेट, it is having like right now, for example Landsat 8 or 9, it is having like more than 10 number of bands. Okay, तो different bands जो है, suppose I am interested for vegetation indices, suppose you are provided with a satellite image of a district. Okay, so in a district, and your area of interest is like a block only, or taluk. In Odisha, like we say it block. In some states of India, we say it at taluk. So someone is interested for his or her taluk or block. So what we will do, we will first extract
that particular the satellite image of that particular block. Okay, then uh, then what we can do ki we are interested for only vegetation. Someone, suppose a person who is having a who is a environmentalist, okay, and another person who is a like urban planner, okay, so two persons are there. So their needs, their customization, their requirement is totally different from each other. Okay, so what a environmentalist or a ecologist, what he or she will think ki she is interested to extract only vegetation from that area. Okay, she is not interested to have the urban area. Okay, so in that case, she will be interested in only two band, that is NIR, near infrared, or IR. So there is a standard formula to capture the NDVI, that is NIR minus IR divided by NIR plus IR. So she or he will be capturing or interested in only those two bands. So but if someone is interested for only water, उसको ओनली वाटर को ही निकालना है, वो जो टोटल सैटेलाइट इमेज है उसमें से कहाँ कहाँ पे वाटर है वो उसको निकालना है, तो ही विल बी गोइंग फॉर NDWI. उसके लिए और एक फॉर्मूला है, जैसे NDVI के लिए ऐसे NDWI के लिए अलग है. NDVI आप कर सकते हो ओनली बिल्ट ऑफ लैंड, अगर आपका जो सेटलमेंट है ना उसको निकालना है. ऐसे बहुत सारा इंडिसेस अवेलेबल है, तो ये भी एक रीजन है. और एक क्या है, सपोज जैसे वी आर हैविंग सम defense mechanism for defense purpose. Suppose, see, for example, we want to monitor something, some sensitive areas are there where some activities are going on, so we want to have some spy satellite, okay, or we want to have some defense based satellite where the resolution is very high and we would like to monitor each and every movement of a particular region or particular sensitive area. In that case also, some satellites are like developed in a customized way. And for example, someone is interested for weather related things. Now see, we are having different type of weather satellite. We are having education based satellites are also there. EduSat is there. Some natural resource monitoring satellites are there. Then just I was talking about the weather related your satellites are there. And also like the we would like to monitor the what is going on the ocean surface. Okay, so for that also different specific satellites are designed, like ocean set 1 2, so many satellites are there. So on the basis of our needs, on the basis of different requirement, different satellites are developed, and also they have the different type of sensor. So now the sensor, it is capturing the or it is recording the energy, then it what it does, it transmit those energy to the ground, and we are having different antennas are there. And like do you heard about the NDC, National Data Center of NRSC, in it is in Saad Nagar, I think, in Hyderabad. Anyone uh, have any idea about what is NDC? Hello, hello, anyone do you have any idea about what is NDC, National Data Center? No, sir. Yeah, it is a product of like NRSC ISRO. So in Hyderabad, what they have done, whatever the satellite image are there, what we are using na, it is actually captured by the National Data Center. If you are in future, if you can get an opportunity, go to NRSC and you can visit those campus. It is it is very restricted actually. So if you are a student and you are having some you are authorized, then you can go there. So you can see the live how what is the position of satellite, and how their the how the national data center, how they are acquiring the information, and how they are processing those information. All the things you can know, that you can learn in that center. Okay, then that data set, like here you can see the interpretation and analysis. A computer is there na, so like it is a
hardware and some sorts of software is required, like ADAS Imagine, Illuis, and so many image processing softwares are there. That is essential. Then definitely manpower is required to uh, work on that. Then the finally that is the application part. And the application we can say that we are having different discipline persons are there. A geography person is there, geologist is there, oceanographer is there, a urban planner is there. So many a decision makers, like suppose a administrative person are there. And now in our talking also, in our forum also, a person from defense is there. So we all record the use of remote sensing and GIS in our different way. Okay, so I think it is clear from all, clear for all of you. Or if you have anything to say in this particular slide, you can ask me. Otherwise, we'll go forward. Anybody, if you want to say something, because it should not be like one-way traffic. Hello. Am I audible? Yes, sir. So Yes. in this slide, you have any doubt or you want to say something, then please आप बताइए, क्योंकि एक तरफ का ट्रैफिक होता है तो मजा नहीं आता है. अगर हम डिस्कशन करके पढ़ते हैं तो वो याद भी रहता है और अच्छा लगता है. तो इसमें अगर कुछ आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे. No, sir. Everything is clear. ओके ना, बिकॉज ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है और हम कुछ जैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए. बिकॉज इट इज़ लाइक हम एक थ्योरी क्लास कर रहे हैं, तो एट एनी टाइम आप कुछ क्वेरी कर सकते हो, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. मान लीजिए कोई क्वेरी ऐसा है कि उसको अभी दिस टाइम में, फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट एबल टू आंसर, then definitely I will say ki now I am not aware of that, and definitely I will try my best to explain those things in the next class also, or maybe in the group or whatever. Because see, everything is known to everyone, it is not possible. So ये भी हो सकता है कि क्योंकि आप लोग भी एक प्रोफेशनल हो, आप लोग कोई स्टूडेंट हो या कोई काम भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी अच्छा नॉलेज है इसमें और किसी का होगा भी, तो वी कैन हैव discussion also in that matter. Okay. Then we'll move forward. सर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, आपने जैसे अभी एनआरएससी के बारे में बताया, सात नगर वालों के बारे में. अभी लेटेस्ट जो साहब इधर वायनाड में जो हुआ था डिजास्टर, हाँ, उस पे उन्होंने रायसेट की इमेज लेके अपनी प्रीवियस इमेज जो उनके पास रिकॉर्डेड थी, जो बहुत पहले ली गई, प्रीवियस इमेज, हाँ जी, उसके बाद उन्होंने उसके साथ कंपैरिजन करके बताया था कि वहां पे कितना इफेक्ट पड़ा है और क्या क्या चेंजेस आ गए हैं अभी लैंड पे. हाँ. अभी देखिए, ये हाँ जी. हाँ, इसमें क्या है, देखिए इसमें ना आप रिमोट सेंसिंग का, सैटेलाइट इमेज का बहुत अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं. और थोड़ा डीपली अगर मैं बोलूँ कि इसको हम बोलते हैं डैमेज असेसमेंट. ठीक है, जैसे कोई भी डिजास्टर हो, जैसे ये अपना लैंडस्लाइड हुआ, या फिर मान लीजिए जैसे स्टेट्स लाइक हमारा उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल है, और इन आवर बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो हम लोग को क्या है, हर एवरी ईयर वी आर फेसिंग साइक्लोन. ओके, सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग फेस कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर, जैसे यू हैव गिवन द एग्जांपल, आपने जो लैंडस्लाइड का दिया केरला वाला, तो उसका जो डे में हुआ ना, उसका मान लीजिए उसका 10 डेज या 15 डेज, 1 मंथ बैक, ऐसा कुछ आप सैटेलाइट इमेज उसी एरिया का लिए, और जिस दिन हुआ, ठीक है, जो टाइम में हुआ उसी टाइम का आप लिए, और उसके लाइक अभी जितना दिन हो गया, 10-15 दिन जो भी है, तो उसका आप अगर एनालिसिस करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट डैमेज असेसमेंट. प्री तो नहीं, इस सबको हम डैमेज असेसमेंट बोलते हैं. तो आफ्टर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी डिजास्टर, उसका क्या इम्पैक्ट रहा इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसका कैसा हालत हुआ, ये सारा चीज जो है ना, हम इसको कैप्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग सैटेलाइट इमेजेस. तो ये एक बहुत अच्छी चीज है. और ऐसा भी है कि देखिए कुछ एरिया जो है दैट इज नॉट एक्सेसिबल, हम वहाँ पे जा नहीं सकते, मतलब
प्रैक्टिकली और इंडिविजुअल हम उसका वहाँ जा नहीं सकते, बट दैट एरिया कैन बी एक्सेस रिमोटली। हम उसको सैटेलाइट इमेज से हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जैसे हिमालयन रेंज है, ठीक है, कहीं पे मान लीजिए स्नो का कुछ एवलेंस का हुआ, ऐसा कुछ मतलब फ्लो हो रहा है, तो उसको अगर हम वहाँ जाकर, तो नॉट पॉसिबल ना, तो उसको हम देख सकते हैं कि कैसे वो मतलब मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दिस थिंग्स कैन बी मॉनिटर वेरी इजीली हम। बट थिंग इज दैट उसको करने के लिए वी नीड टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। उसमें क्या है कि सम इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज मुझे दिल्ली एनसीआर का अर्बन स्प्रॉल का स्टडी करना है, ठीक है। मुझे एक दिया गया, आई एम बीइंग असाइंड, सो और एक है जैसे मेरा बैकग्राउंड है रिमोट सेंसिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मेरा एप्लीकेशन मैं अभी डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, ओके। तो और एक बंदा है या बंदी है जिसको कि दिया गया है कि भाई वो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट है वो, या और एक है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। 3 लोगों को दिया गया है, एक साइंटिस्ट है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इसी हिसाब से आपका कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चीज़ क्या है। अभी सैटेलाइट इमेज अगर मैं आपको दे दूं, ऐसे बोल दूं कि इसको आप कैटेगराइज करो कि कौन सा चीज़ क्या है, लाइक लैंड यूज उसका क्या है, उसका पैटर्न क्या है, एसोसिएशन क्या है, ऐसे सब चीज़ को देखने के लिए आपको जो इंटरप्रिटेशन कीज के बारे में यू मस्ट हैव द नॉलेज। तो इंटरप्रिटेशन कीज क्या क्या होता है, जैसे अभी मैं बोला ना, एक आपका एसोसिएशन ये कीज है, टोन, टेक्सचर, कलर, ये सब जो है ना हम आगे आगे जो क्लास है ना आपका, आगे क्लास में हम उसको लर्न करेंगे कि हाउ टू रीड ए सैटेलाइट इमेज। सैटेलाइट इमेज को हम कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंटरप्रेट, उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये सब विल बी लर्निंग इन आवर कमिंग क्लासेस, ओके। अभी आई थिंक क्लियर हुआ आपका, आपका जो मतलब माइंड में आ रहा था कैसे यूज हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, Excuse me, sir. हाँ एक्सक्यूज बोलिए। Sir, sir, you talked about NDVI and NW, जो NDWI. What हाँ are हाँ these? These are different bands. हाँ, देखिए ये NDVI, NDWI हो गया, NDBI हो गया, और भी बहुत सारे ये सब इंडिसेस होता है। इसमें क्या है कि लाइक सपोज आपका एक स्टडी एरिया, टोटल टोटल उड़ीसा का मैं बात कर रहा हूँ, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जांपल, डिस्ट्रिक्ट में से सपोज someone who belongs to फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, ओके। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है, ही इज इंटरेस्टेड टू नो कि in the last 50 years how the forests are degrading, or due to the initiative by government, whether in some area the afforestation is going on, or whether it is deforestation or it is forest degradation, ऐसा अगर कुछ आपको स्टडी करना है, ठीक है, देन यू कैन यूज NDVI, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडिसेस। तो इसमें विल बी लर्निंग दैट इन आवर व्हेन आवर प्रैक्टिकल क्लास विल बी देयर, बट आप मतलब ब्रीफली आप ऐसा मैं कह सकता हूँ कि टोटल एरिया में बहुत सारा चीज़ है, कहीं पे आपका रिवर है, फॉरेस्ट है, कहीं पे सेटलमेंट है, वो सारा चीज़ को आप एक साथ नहीं लेके यू विल बी एक्सट्रैक्टिंग ओनली वेजिटेशन, जहाँ जहाँ पे वेजिटेशन है उसी चीज़ को वो निकाल देगा और आपको एक्स्ट्रा आउटपुट करके दे देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं NDVI। लाइकवाइज सपोज समवन इज इंटरेस्टेड फॉर, आपका कोई अर्बन का है ना, तो और टाउन प्लानर है, उसको क्या चाहिए कि आपका जो भुवनेश्वर है या फिर दिल्ली है, कोई भी मतलब आपका अर्बन एरिया है, वहाँ पे बिल्ट अप लैंड, आपका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट को ही वो लेना चाहता है कि सेटलमेंट कैसे था, अभी कैसा है, और हाउ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ चेंजिंग, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ चेंजिंग ऑफ दैट सेटलमेंट। तो वहाँ पे द NDBI, नॉर्मलाइज डिफरेंस बिल्ट अप इंडेक्स विल बी देयर। वहाँ पे क्या होगा, ओनली बिल्ट अप इंडेक्स, बिल्ट अप को ही वो एक्स्ट्रा करेगा। ऐसे ही सपोज कोई वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट का है, या फिर लाइक फॉर सम वाटर रिलेटेड वर्क समवन इज डूइंग, देन वो अगर ओनली इंटरेस्टेड फॉर वाटर, तो ओनली वाटर विल बी
captured and it will be in a different output. The output will be only water will come there. तो ये उसका मतलब ये है, मतलब कैटेगराइजेशन है। ऐसे और बहुत सारा चीज़ है आपका, आप मॉइस्चर को एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारा इंडिसेस है जहाँ पे भी मतलब उसका अलग अलग फॉर्मूला रहता है और उसके हिसाब से आउटपुट अलग अलग आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम चीज डिस्कस किए ना उसका ही स्लाइड है अभी आगे, जैसे इसीलिए आई थिंक हम उसको स्किप कर सकते हैं। जैसे एनर्जी सोर्स है, इसमें क्या है, ये आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो सोर्स सन से आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो रहा है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा अर्थ सरफेस है, इट इज लाइक इट इज हैविंग द इंटरेक्शन। देन आपका एटमॉस्फेयर में कैसे रेडिएशन हो रहा है, कैसे एटमॉस्फेयर को पास कर रहा है, देन टारगेट को हिट कर रहा है हमारा अर्थ सरफेस को। देन मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम वहाँ पे डिस्कस किए, वो सारा चीज़ का यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अभी ये वाला टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग अभी हम विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द टाइप्स, ये भी हम डिस्कस किए थे। तो अभी ये स्लाइड चेंज हो रहा है ना, अगर कहीं पे चेंज नहीं होगा तो प्लीज टेल मी। तो नाउ वी आर इन ए स्लाइड दैट डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंसर और रिमोट सेंसिंग ऑल्सो आई कैन से। तो ये यहाँ पे स्लाइड ठीक है ना, पैसिव एक्टिव वाला आ रहा है अभी, इट इज विजिबल? Yes. Yeah. So here you can say that in the top actually, that is the example of passive. Here you can see the sun is there. So in the arrow, sun rays is coming, and it is having some sorts of interaction in the earth surface, and again it is going back, and the sensor is capturing the information. So it is about passive. So but thing is that, as we already discussed, ki if we are having some like in the night time it is there, and also like some the weather condition is not favorable. Okay, so in that time we are having some sensor which you have their own source of energy. Okay, उनका खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे आपका रडार हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और कोई और एक दो एग्जांपल कोई दे सकता है क्या एक्टिव रिमोट सेंसिंग का? एनीबॉडी, रडार को छोड़ के एनीबॉडी आप दे सकते हो रडार को छोड़ के और कुछ एग्जांपल? लीडार। लीडर क्या होता है? लीडर का फुल फॉर्म और उसका एप्लीकेशन क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे आप ले सकते हो? लीडर का कहाँ पे ले सकते हैं? एनीवन? नहीं, ओशियंस में। ओशन में कैसे लोगे बताओ मुझे। ओशन में आप लीडर का कैसे लोगे? मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, सोनार है, सोनार भी और एक एग्जांपल है। तो आप ओशन में सोनार को यूज करोगे या वो लीडर को यूज करोगे? बताओ, थोड़ा सोच के बताइए। आई थिंक इट्स अर्चिता ना? हेलो, हाउ यू विल बी यूजिंग लीडर इन ओशन? यस, ओके, मैं क्लियर करता हूँ। आपका जो लीडर जो है ना, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये बेसिकली क्या है कि सपोज आपका कुछ मिनरल्स है, ठीक है, आपका जो अर्थ का मटेरियल है, मतलब अर्थ का सरफेस है, उसके नीचे कुछ है, समथिंग इज देयर इन द बीनीथ द अर्थ सरफेस, आपका क्रॉस जो है ना। तो लीडर इट कैन द पल्स और द एनर्जी that is like it comes from the leader instrument, it can penetrate the crust, and again it is reflected back from the target things like minerals है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा, आपका सेंसर उसको कैप्चर करेगा। ये लीडर का है, मोस्टली इट इज यूज इन हमारा जो बीनीथ सरफेस जो है उसको करने के लिए, ठीक है। और तीसरा जो मैं बोल रहा था सोनार, ये जो होता है साउंड का। इसमें क्या होता है कि आप जो ओशन बोले उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई लाइक
आपका ओशन व्हीकल है या फिर सीप है, कुछ भी है, तो वो दे आर यूजिंग सम साउंड। ओके, तो वो साउंड ना जाके कहीं पे कोई टारगेट अगर है तो वहां पे अगेन रिफ्लेक्ट होके अगर आ रहा है, और आवर जो सेंसर है इट विल कैप्चर द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, तो वहां पे सोनार यूज होता है। ठीक है, अभी क्लियर या कुछ है तो बताइए। सर रडार का एप्लीकेशन क्या बोले आप? रडार में कैसे, देखिए अभी सपोज आप जैसे कोई साइक्लोन होता है ना, आप तो न्यूज में देखे होंगे कि ये साइक्लोन जो है इतना दूर तक है, यहाँ लैंडफॉल होने वाला है, ऐसे आता रहता है ना न्यूज में। न्यूज एजेंसी या आपका जो वेदर मैन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो सब बोलते रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा जो कोस्टल स्टेट्स है, जैसे पारादीप है हमारे यहाँ, ठीक है, पारादीप में रडार लगा हुआ है, तो उसका एक बोलते हैं ना इसका रडार इतना तक है। एयरफोर्स में भी उसका यूज होता है, आपका ये वेदर के लिए होता है कि जैसे जो साइक्लोन का मूवमेंट, तो साइक्लोन इज कमिंग, तो उसका जो मान लीजिए 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जो भी है उसका रेंज है, उसी रेंज में अगर वो क्लाउड आ गया ना, सो इट कैन डिटेक्ट द क्लाउड। तो बेस्ड ऑन दैट रडार इमेजरी एक्चुअली वी कैन इंटरप्रेट कि भाई उसका क्लाउड का हाइट कितना कैसा है, तो व्हाट टाइप ऑफ इंटेंसिटी कैसा है उसका, ये सब चीज ना वी कैन इंटरप्रेट। ये एक एग्जांपल है। और तो बाकी सो मेनी एप्लीकेशन आर देयर, जैसे आपको तो पता है कि आपका क्या है, डिफरेंट आपका एनिमी का जो मूवमेंट होता है, जो आपका प्लान का, ये सब में भी हमारा एयरफोर्स, मिलिट्री, डिफेंस पर्सनल दे यूज इट वेरी वाइजली। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे और एप्लीकेशन है जो हमें भी पता नहीं है, बट और बहुत जगह से भी लाइक द यूज ऑफ रडार इज गोइंग ऑन। ठीक है, अभी वही चीज है जो व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड कि इन लाइक पैसिव रिमोट सेंसिंग में लाइक सन इज देयर एंड आवर आई इज द पैसिव सेंसर, ऐसे है। देन इन एक्टिव हम रडार, लिडार, सोनार जो बोले, दिस थिंग्स आर देयर, सो आई एम स्किपिंग दिस स्लाइड। देन अभी एनीवन आप बताइए कि भाई एडवांटेज क्या है रिमोट सेंसिंग का, व्हाट आर द एडवांटेज। अभी हम रिमोट सेंसिंग वी आर कॉलिंग फ्रीक्वेंटली, so like we can get the global coverage। abhi someone was giving the example of Wayanad in Kerala, so see, without going to that place also, if we are staying in our lab and we are access the satellite image of that particular area, then we can know that what is the condition of that area. So the accessibility is very beautiful when we are using remote sensing। Then the synaptic view already we discussed। then the third one is the repeatability। ये बहुत अच्छा उसका मतलब एक दिस इज मेरिट, बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया है उसका बार बार उसका मतलब लाइक 10 days 15 days टाइम इन टेम्पोरल जो रेजोल्यूशन है ना, इन दैट पीरियड वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, तो उसका जो वी कैन डू द मॉनिटरिंग, हम मॉनिटर कर सकते हैं, ये उसका मेरिट्स है। देन when you talk about the cost, then obviously satellite remote sensing आजकल बहुत मतलब आई कैन से बहुत चीप हुआ है, बहुत इट इज नॉट सो कॉस्ट, पहले जैसा इतना कॉस्टली नहीं है, और वेरी ओपनली ऑल्सो वी आर गेटिंग सो मेनी लाइक सैटेलाइट इमेजेस। ओके, आप कोई आप बता सकते हैं कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, मेरे नेक्स्ट स्लाइड में है, बट एनीवन कैन यू आंसर कि एनी व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, एनीवन? सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर टाइम पे वो ये ठीक नहीं होता, बट कुछ सैटेलाइट ऐसी हैं जो कि क्लाउडी इमेजेस को देती हैं, तो उन सैटेलाइट्स के लिए वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे फिर रिमोट सेंसिंग सक्सेसफुल नहीं होती। नहीं, उसमें देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपके इसमें से मतलब डिसएग्री करता हूँ कि जो जैसे आप बोले कि कुछ सैटेलाइट नहीं देती हैं, दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज वो दैट डिपेंड्स ऑन द एटमोस्फेरिक कंडीशन। आपका ये जो क्लाउड जैसा होता है ना, इट हैपेंस इन द स्ट्रेटोस्फीयर ओनली ना, हमारा जो डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, सॉरी ट्रोपोस्फीयर में ये सब जो होता है, तो अगर जी आपके वहाँ बारिश हो रहा है, क्लाउडी कंडीशन है,
और जी यू आर यूजिंग ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, दैट इज द पैसिव रिमोट सेंसिंग, आप यूज कर रहे हो, तो आपका जो सन रेज है ना वो तो जी पेंट्रेट कर नहीं पा रहा है आपका क्लाउड को, ठीक है। तो अगर क्लाउड को पेंट्रेट कर ही नहीं पा रहा है तो हाउ कैन वी गेट द इंफॉर्मेशन, हम नहीं मिल सकता है ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो वहां पे अगर हमारे पास कुछ लॉन्ग वे मतलब लॉन्ग रडार। वेव है ना, रडार, हाँ मतलब माइक्रोवेव, ये सब जो लॉन्ग वेव होता है ना, वहां अगर हम यूज करते हैं तो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, बिकॉज दैट इज कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द क्लाउड, ओके। तो ऑल वेदर कंडीशन में इट कैन बी ऑपरेटेड। तो वो मतलब वो एडवांटेज है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। बट यस, राइटली यू से कि अगर उसी एरिया का, if we do not have the radar satellite, or like we don't have the radar system is not there, and we don't have any active remote sensing in that place, then definitely that can be a disadvantage, okay. यस यस। Yeah. ओके। And another, any other issue you feel that this is the disadvantage, because so many disadvantages are there. I can count it. Anybody? In a single sentence I can say that it is not the answer to all question. Am I right? Am I right ki remote sensing cannot answer whatever question is going on in our mind, in terms of what, in terms of managing the natural resources, in terms of taking a wise decision, in terms of managing a disaster. So ये जो अलग अलग themes है ना, ये सारे चीज में remote sensing is not uh, definitely it plays a vital role, but I cannot say that it answers or it is a solution to every problem that we have. ना, नहीं ऐसा है ना, सब तो नहीं मिल सकता ना भाई। और एक चीज क्या है, एक प्रॉब्लम है, आप लोग, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि सी, हाँ, कोई हमारे एक बंधु थे जो कि आपके यहाँ से है ना, डिफेंस से हैं, ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एज ए साइंटिस्ट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल एंड वेरी एकेडमिक इट इज, आई रिपीट। सो थिंग इज दैट सपोज अभी जो 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ ना, एट दैट टाइम इंडिया वी डिडंट हैव द जीपीएस सिस्टम, हमारे पास नहीं था ना, हमारे पास जीपीएस सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो वी एट दैट टाइम हम लोग डिपेंड कर रहे थे यूएस के ऊपर, दिस जीपीएस सिस्टम के ऊपर। तो जो जो टेररिस्ट और व्हाट एवर एंटी सोशल पीपुल, उनका जो लोकेशन था, दे वर ऑन हायर एल्टीट्यूड, ओके। तो हम लोगों को जो है उनका लोकेशन ठीक से पता नहीं चल रहा था, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सो मेनी इशू। तो अभी क्या है कि नाउ द इसरो, वी आर वेरी वेल कैपेबल, वी आर हैविंग आवर ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एनीबडी, किसको आइडिया है क्या है इंडिया का खुद का अभी एक जैसे जीपीएस है ना वर्ल्ड वाइड यूएस का, ऐसे इंडिया का क्या है, एनीवन आप बोल सकते हो, किसको पता है? जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। आर यू श्योर वो इंडिया का है? सर नेविक, नेविक तो उसका ये है, एक्चुअली है आईआरएनएसएस, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसमें क्या है, आई थिंक 7 और 8 है टोटल, इसमें सैटेलाइट कंसल्टेशन है। जैसे आपका जो जीपीएस है यूएस का, उसमें 24 का होता है, हमारा 7 या 8 है, आई एम नॉट एग्जैक्टली, पता नहीं है मुझे 7 या 8, क्योंकि वो बीच में बढ़ा भी सकते हैं रिक्वायरमेंट है तो उसमें क्या है कि हमारा इंडिया हो गया या फिर नाइबरिंग कंट्री है ना, इसका सारा हम खुद का हमारा जीपीएस है, मतलब जीपीएस हमारा जो खुद का नॉट जीपीएस, खुद का हमारा नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। और देखिए ये जो मैं बोल रहा था कि इट इज नॉट द आंसर टू ऑल योर प्रॉब्लम, एंड बट we can use it a very wisely, and very important thing I was talking about कि आप आपके ऑफिस में बैठे, आपको सैटेलाइट इमेज मिल गया, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मुझे आपका सुंदरबन का मिल गया या फिर मुंबई का मिल गया, मुंबई का आपका जो कुछ मतलब वेजिटेशन एरिया है उसका मिल गया, मैं यहाँ से आई विल डू माई इंटरप्रिटेशन, और मैं बोल दूंगा कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये
एक मैंग्रोव का ये स्पेसिस है, ये स्पेसिस है, उसका स्पेसिस का क्लासिफिकेशन मैं यहाँ से कर दिया। नो डाउट सपोज आई एम हैविंग द मास्टरी इन लाइक आई एम सपोज मेरा बायोलॉजी का मेरा कुछ है, मतलब एक्सपर्टाइज है स्पेसिस के ऊपर, आई वर्क मैं कर दिया, बट थिंग इज दैट remote sensing needs ground truth collection. Okay, so whatever we have done in our lab, that needs to be verified. Okay, ऐसा माना जाता है in like in remote sensing we consider प्लस माइनस 5% का होना चाहिए ग्राउंड ट्रूथ कलेक्शन, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम जो भी हम यहाँ बैठ के किए वो सारा करेक्ट है, ठीक है, बहुत सारा चीज गलत हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई दोज थिंग्स वी नीड टू हैव द ग्राउंड ट्रूथ कलेक्शन। वहाँ जाके वी नीड टू सी कि हम यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक आपका मार्सी लैंड है या फिर कुछ वेटलैंड है, उसको उसको मैं क्लास कर दिया कि ये बेरेन लैंड ऐसा लग रहा है मुझे, मान लीजिए, या कुछ सेटलमेंट लगा, मतलब सपोज मेरा वो आइडिया नहीं है, तो मैं उसको वो क्लास में दे दिया, बट इन रियल दैट इज नॉट देयर। तो दीज थिंग्स कैन बी मोडिफाइड इफ यू आर गोइंग टू द फील्ड से हम फिर इंफॉर्मेशन लाए, कैसे लाएंगे, विल टेक द कोऑर्डिनेट्स, उसका जीपीएस यूज करके, या आजकल तो मोबाइल में भी अवेलेबल है, बहुत सो मैंने एप्लीकेशन सर दे, तो उसको यूज करके हम उसका कोऑर्डिनेट लाए, उसी कोऑर्डिनेट को विल बी सुपर इम्पोजिंग इन आवर सैटेलाइट इमेज, आपका सॉफ्टवेयर यूज करके, देन आपका वो फिर दैट कैन बी क्लियर कि भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, ठीक है। और देन this slide you can see that application of remote sensing, as I was earlier talking कि क्या क्या application है यहाँ पे, कुछ मतलब कुछ मैं एग्जांपल दिया हूँ कि जैसे आपका एग्रीकल्चर में है, आपका क्रॉप प्रोडक्शन एस्टिमेशन, इसमें आपका ये यूजफुल है, आपका वाटरशेड डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर में है, देन इन फॉरेस्ट like forest cover, forest type, then forest fire can be monitor। तो ऐसे बहुत सारा चीज में ये हो सकता है। देन आपका लैंड यूज लैंड कवर में अर्बन स्प्रॉल, ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें कि इट इज यूजफुल। ओके, तो आई थिंक ये और इसमें कुछ का अगर कुछ ये है तो डाउट है तो आप पूछिए। सो आई थिंक इसमें हम इतने में आज के क्लास को हम स्टॉप करेंगे, अगर किसी का कुछ है तो आप पूछिए, अदरवाइज टुमारो विल बी डिस्कसिंग। सर हाँ बोलिए। कल आप क्या पढ़ाने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि हम अगर हमारे पास जिनके पास बुक्स हैं हम उसमें से थोड़ा बहुत रीड आउट कर लेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, हमें भी कुछ नॉलेज रहेगी तो हम आपसे बता पाएंगे या पूछ पाएंगे ठीक है उसके ठीक है, रिलेटेड। मैं एक काम करता हूँ, आज तो एक्चुअली जानबूझ के मैं एक ओवरऑल, मतलब क्या है कि आप लोग को साथ हम डिस्कस करें, एक ओवरऑल आइडिया के लिए आज का मेरा ये प्रेजेंटेशन था। बट टुमारो ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे ना, आपका जो जो स्लाइड में है, सॉरी आपका जो सिलेबस में जो है ना, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हम आज जैसे हम डिस्कस कर लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे हो गया, तो कल हम उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कैसे होता है, जैसे जियोलॉजी हो गया आपका, जियोग्राफी में कैसा है, अलग अलग में कैसे कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका अगर टाइम होता है तो रिसेंट ट्रेंड के बारे में, क्या क्या आजकल मतलब ट्रेंड्स हैं, ठीक है, या आपका कुछ जैसे आज के जैसे चल रहा है आपका बिग डाटा एनालिसिस क्या है, और कुछ प्रोडक्ट्स क्या है जो इन्फॉर्मेटिक्स का, मतलब आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का जो आपका ओवरव्यू ऑफ जो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, उसके अंदर आपका मैं ट्राई करूँगा कि आपका और 2 मिनिमम कंपोनेंट्स ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स तो कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और उसके साथ क्योंकि वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जियोडेसी, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, इस सब में कैसे मतलब अलग अलग क्या कंपोनेंट्स है, इस सब के बारे में
और फिर अगर टाइम होता है तो डेफिनेटली हम ये आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोडक्ट ये सब देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। सर हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप है सर, हाँ और मैं जो हमारे ग्रुप के एडमिन होंगे मेरे ख्याल से होंगे इसमें क्लास में भी, तो उन्हीं से रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपका नंबर वो ऐड कर दें। ठीक है। या तो सर ये क्लास के बाद जो आपकी स्लाइड है अगर उसमें आप शेयर कर देंगे तो हमारे लिए थोड़ा हाँ, आप कर लीजिए, बेनिफिट वो मैं होगा। शेयर भी कर दूंगा। और इन एडिशन टू दैट कुछ मुझे जो अच्छा लगते हैं, कुछ बुक्स हैं, पीडीएफ हैं, तो वो क्या है, कुछ हम लोग को मतलब ऑफिशियल के वजह से हम लोग को मिला है वो, तो शायद आप लोगों को यू हैव टू परचेज और मे बी डिफ़िकल्ट होगा एक्सेस करना। तो ऐसे कुछ बुक्स भी मैं वहाँ पे दे दूंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, आप कोई भी एक ग्रुप बना ग्रुप अगर है जैसे आप बोल रहे हैं, तो है इसमें सर। आप हाँ मुझे ऐड कर दीजिए। और कुछ अगर क्वेरी होता है तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे वहाँ भी ये करने के लिए। ठीक है। सर थैंक यू सर। चलिए भाई, सब लोगों को मतलब थैंक यू। एंड आप लोग मतलब अभी हम तो घर निकलेंगे, तो आप लोग भी कहीं मूवमेंट करना है तो कीजिए। और वन सेकेंड थैंक यू एंड गुड नाइट बोल देते हैं, 8 तो बजने वाला है ऐसे भी। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ किसी को कुछ कहना है क्या? एनीबडी? सर वो प्रैक्टिकल कब से स्टार्ट होगा वो थोड़ा वो थोड़ा सा मतलब मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये आपका जो सेंटर है ना, वो लोग मुझे आ, इसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं अभी। और मुझे प्रैक्टिकल का भी कुछ असाइनमेंट नहीं दिया गया है। ओनली नाउ आई एम असाइन विथ योर थ्योरी क्लासेस। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं लेता हूँ क्लास, बट दिस टाइम नहीं लिया गया बिकॉज मेरा भी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज सडन मेरा मीटिंग हो गया तो मैं नहीं रह पाया। तो अगर आपका इग्नो वाले कुछ प्लान करते हैं, अगर हम लोग को बोलते हैं, तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। अदरवाइज आप लोग भी पूछ सकते हैं उनको कि कब क्या प्लान है, क्या है। ठीक है। सर प्रैक्टिकल क्लासेस जैसे होने के बाद हमें किस तरह का असाइनमेंट सबमिट करना है, कैसे है, उससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर कुछ बता सकते हैं तो नहीं प्लीज सर। देखिए, ये आपका MSCGI तो फर्स्ट टाइम इग्नोर कर रहा है। ठीक है। बट उससे पहले जैसे आपका PGCGI चलता था, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सब उसमें क्या होता था कि पहले फ्रैंकली स्पीकिंग 1 to 1 जैसे आपका ऑफलाइन मोड में क्लास होता था सारा। ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल जो भी है ऐसे भी क्लास लेते थे, बहुत सारे कॉलेज हम लोग लेते थे। तो अभी ऑनलाइन हुआ है, तो ऑनलाइन ये लोग कैसे हाउ दे मस्ट हैव प्लान फॉर दैट कि कैसे प्रैक्टिकल क्या करना है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि अभी तक कुछ हम लोगों को प्रैक्टिकल के लिए नहीं बोले हैं। ठीक है। ओके सर। ओके क्योंकि यहाँ जो भी है ना, आपका 23 सितंबर तक जो क्लास है, यहाँ प्रैक्टिकल का नहीं है इसमें। MGY-1 101 102 3 5 इसमें प्रैक्टिकल का नहीं दिया गया है। अगर बोलते हैं तो हम डेफिनेटली करेंगे। हाँ, बट फ्रॉम माई साइड आई कैन से दैट अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टी हो रहा है, आप एडवांस में प्रैक्टिकल में अगर का भी अगर कुछ मेरे से मदद चाहिए, तो इफ़ आई एम फ्री देन डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग यू। ठीक है। सर वी विल डिस्कस लेटर ऑन द क्लासेस आफ्टर द। एंड 1 to 1 ऑल्सो इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड यू कैन कॉल मी। ठीक है। और मेरे वो नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। चलो भाई, सबको गुड Thank you, नाइट। sir. गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट टू एवरीवन। हाँ, चलो बाय। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। चलो थैंक यू कल सर, मिलते हैं। थैंक चलो।